welcome back to my channel. So today I'm going to show you guys all the birthday gifts that I got this year. I was not planning to do this video honestly because मैंने last year भी नहीं किया था and showing gifts kind of feels pointless to me sometimes, but because I did not post a birthday vlog, you guys were asking me कि कोई birthday video है कि नहीं, so I was just like, you know what, let's do this instead. And yeah, I'm sorry, I know this video is like super late. It is also because I have been going through so much in my life, like health wise, and just like so much is happening. I would say we are fashionably late. And yeah, I hope you guys enjoy watching this video and let's get started. You will hear me talk about a vacation in this video that never happened and उसके details and मैंने क्यों अपने birthday पे vlog नहीं किया वो सब मैं बिल्कुल end में बोलूँगी because that is kind of like a story time. So my mom wanted to give me something for my birthday in the sense कि जो मैं birthday के दिन पहनूँ या कुछ ऐसा, you know, parents they want you to wear new clothes on your birthdays and stuff. I'll show you guys the outfit, but I'll also show you guys this random thing that I got. So मैं H&M home गई थी. I don't know if you guys know, but H&M home करके पूरा home center जैसा ही है वो. And वहाँ पे I found this huge ass candle. Like this is one of the biggest candles I've ever seen, like size में. Now this smells so good. I am not even kidding you. This is called Sublime Patchouli and this is only for 1399, and I say only for 1399 is because look at the size of this. And Bath and Body Works में इसका आधा कैंडल मिलता है for like 2400 या 2800 कुछ. So in that comparison I am saying a candle of this size for 1399 is excellent. Smells so good. इसका थ्रो बहुत अच्छा है and it's not like too much also, but ऐसे ना मेरे पूरे रूम में एक बहुत अच्छी सी खुशबू होती है. My mom also really likes it and I have been burning it like every single day. You guys can see like I have been using it a lot. And हाँ ये टनल हो जाता है so I need to like scoop it out ऐसे करके, तो वो सिस्टम मैं कर रही हूँ आजकल. But honestly I have no complaints. जब ये खत्म हो जाएगा मैं एक और खरीदूंगी because I just love the scent so much. Before I show you guys rest of the gifts, I want to thank today's sponsor partner, that is Freecharge. You all know that I love to shop online and I know you guys also like to shop online. So Freecharge brings you a pay later option. आप Zomato से order कर सकते हो. You can also pay for your groceries and keep all your bills in one place. And you can see कि आपका एक मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ है. मुझे पर्सनली पेमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ because again OTP, CVV ये वो. So this is such a convenient way to not only like shop online, जो भी आपको खरीदना है ग्रोसरीज या फिर कहीं पे भी आपको शॉपिंग वगैरह भी करनी है वो सब भी आप कर सकते हो एंड फिर बाद में आप इकट्ठे अपना बिल पे कर सकते हो without any hassle. You also get cashback on Zomato, Myntra and Swiggy. Zomato and Swiggy तो literally हर कोई यूज करता है तो आपको कैशबैक मिलता रहेगा. And Freecharge is accepted in all leading brands. This is not only a great app for you guys, but it is also great for your family members, like बहन भाई या फिर पेरेंट्स जो भी ऑनलाइन शॉप करता है सबको इससे बेनिफिट हो सकता है. So don't forget to check out Freecharge. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. Now coming to the outfits, मैंने ये outfits वेकेशन पे तो नहीं पहने but I wore it for just like at home. अपना एक पेन के फोटो खिंचवा लिया था मैंने अभी 2-3 दिन पहले. You guys have been bombarding my Instagram comment sections and my DMs about this top. This is from H&M. Now this is like a butterfly top. इसमें ना इतने cute ऐसे designs है. You guys can see like अलग-अलग flower designs. It's very cute. It's a little booby यहाँ से, but it looks so nice. It's very flattering. And मैंने इसको extra small size में लिया था. This was a little expensive. I think this was for 2200 or 2500 if I'm not wrong. And I got this from Vasant Kunj का जो H&M है, क्योंकि ये नोएडा वाले H&M में कुछ अच्छा नहीं मिलता है. I've seen it like there's no way I can find something good here. It's better to order it online या फिर अगर मैं मॉल में हूँ तो मैं H&M वसंत कुंज से लेना प्रेफर करती हूँ. एंड ये एक्चुअली मैंने सोचा था मैं अपने बर्थडे पे ना डे टाइम पे पहनूंगी, लाइक माई डे टाइम आउटफिट. सो उसके पर्पस के लिए ही मैंने ये इसको खरीदा था, बट yeah, never mind. This is also a gift. I got a Calvin Klein bralette and you guys know I've been wearing Calvin Klein for so many years that I really love their quality and stuff like that, and I know कि ये मुझे कम से कम नहीं तो 3-4 साल तो चलने ही वाला है. So yeah, this is the next thing that I got. I got some things from Sephora. Okay, इसमें एक परफ्यूम भी है, ये बाद में दिखाती हूँ. These are the two things that I got for myself only. So I got Benefit का Benetint. I have been loving this so much. I use this like almost every single day, especially on my no makeup looks, जहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ एंड ये लगा लेती हूँ या फिर बीबी क्रीम के ऊपर ये लगा लेती हूँ. I use it like in so many ways. This is like water, ठीक है.
एंड इसको आप जितना ब्लेंड करोगे ना उतना आपके स्किन में ना बिल्कुल ऐसे घुल जाता है. It literally melts in your skin and then it leaves a beautiful stain. I love to use this on my cheeks and on my lips. This is again for around 1900-2000, very expensive, but to be honest I feel like it's totally worth the money. Like this is one of those things that you splurge on and you get like पूरा पैसा वसूल हो जाएगा आपका. And I've used a lot of tints and stuff, but I have not used anything that is close to this. Next thing that I got is this. This also I got for traveling purposes only. This is Clinique's Take the Day Off Balm. I've heard a lot about this. मैंने इसको use भी किया पहले. This is what it looks like. So a lot of people say कि जो वो Plum का E-Luminous Balm है, that is like a dupe of this. I don't know. मैंने अभी तक वो Plum वाला use नहीं किया है. So I don't know. I will have to use both of them. Should I use both of them in a video and do like a dupes video? Let me know if you guys would want to see that. मुझे लग रहा था कि ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, but जिस हिसाब से मैं इतना बात कर रही हूँ तो लग नहीं रहा है. Okay, next present that I got is a perfume from Zara. This is very fruity. This is very floral, like fruity floral का वो जो एक combo नहीं होता, ये बिल्कुल वैसा ही है. It smells really good actually. I really like it and इसका भी size बिल्कुल perfect है. आजकल I prefer to get everything in a smaller size because it's easier for me to use up, and I've been really into using up my products like my skincare, hair care. मैं सब कुछ आजकल उसको बिल्कुल फुल पोटेंशियल तक यूज़ करती हूँ एंड पूरा खाली हो जाता है तब तक यूज़ करती हूँ एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाइक यू नो टू सी प्रोडक्ट्स गेट यूज्ड अप. देन आई ऑल्सो गॉट दिस, द बेस्ट गिफ्ट एवर. दिस इज अ टाइनी टैन जंगकुक का, इसको क्या बोलते हैं, बॉबल हेड बोलते हैं क्या? I love this so much. This is literally the best birthday gift ever. I was screeching, screaming, crying जब मैंने इसको देखा था and I was just like this is literally so cute and इसका size बिल्कुल perfect and you guys know how much I love like stuff like this. So yeah, I got this. Like look at his hat go. And I also got jewelry. So this is a very special gift actually. I've been eyeing this रिंग फॉर अ वाइल नाउ. आई रियली लव ऐसे बड़े थॉटफुल से गिफ्ट की. मैंने कभी बोला अरे ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड देन यू नो कोई मुझे वो गिफ्ट करता है बिकॉज दे रिमेंबर दैट आई सेड दैट आई लाइक इट. दिस इज अ रिंग. लेट मी शो यू. दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल रिंग. दिस इज व्हाट द रिंग लुक्स लाइक यू गाइस. इट इज a crescent ring and I am obsessed with this. First of all because it is on my pinky and यहाँ पे मेरा tattoo है. इतना सुंदर है, सामने से ना ज़्यादा सुंदर है. I don't know अगर ये कैमरे पे इतना अच्छा ट्रांसलेट कर पा रहा है कि नहीं, but it is absolutely stunning. Very minimalist, very me type of jewelry. You guys know like मुझे ऐसी टाइप की ही ज्वेलरी पसंद है. आजकल मैं एक्चुअली और ज्वेलरी पहनने लगी हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी. But yeah, this is the ring that I got. Let me show you guys this birthday gift that a jewelry store sent to me. This is by Elite Jewels and they have sent me some of the best jewelry pieces of my life and I consider this as a birthday gift क्योंकि मेरे बर्थडे के अराउंड उन्होंने मुझे भेजा था हैप्पी बर्थडे करके. So the first thing already I'm wearing, these are the hoops. These are so pretty. Like look at that. इतने सुंदर, इतने statement वाले hoops है ना ये and they just look so good. They complement so many of my outfits and these days I've been wearing a lot of hoops and just like you know trying to accessorize and stuff like that. And मेरे new hair के साथ ना ऐसे gold jewelry बहुत ज़्यादा complement करती है. So I've been wearing these a lot and they have like anti tarnish jewelry, मतलब and they have like anti-tarnish jewelry and waterproof and stuff like that. So काफी durable है, काफी time तक आपकी चलेगी. I will link their page in the description box below. But they also sent me more things. Let me show you my most favorite piece. So इस पे भी एक crescent बना हुआ है and see it matches with my ring. ये तो पहनने के लिए मैं ready हूँ and it's so pretty, so dainty and इसका quality is so good. Like if you have to gift it to someone, amazing quality. I'm like absolutely in love with that. The second is this necklace. These are so in these days कि आपने इसको ऐसे ही करके पहन and it looks so good. These are super expensive in general but they have like at reasonable prices and stuff like that. So I would really encourage you guys to like check out the page in case you like something. And they also sent me this. So it's basically 2 halves of a heart as earrings. What a good concept and I really like these as well. And ये उतना gold नहीं है so like
really liked it. I can wear it with white outfits and stuff. And I want to again give a huge shout out to Elite Jewels. And now I will show you guys 2 bags that I got for myself. So I splurged at Charles and Keith, and you guys know Charles and Keith is like my go-to for bags. उनके यहाँ पे कोई ऑफर चल रहा था Women's Day का, तो मैंने Women's Day पे खरीदा था कि मैं वेकेशन पे लेके जाऊंगी. I know you guys are thinking कि एक और ब्लैक बैग खरीद लिया होगा इसने. No, I have a surprise for you. I did not buy a black bag. Look at that. हैंडल पे ऐसे स्टोन्स है, बट दीज जस्ट रिमाइंड मी ऑफ माई क्रिस्टल्स. ऐसा लग रहा है मैंने अपनी वैनिटी से क्रिस्टल्स उठा के इसमें डाल दिए. एंड आई एम जस्ट, मैंने जैसे ही देखा था, दैट वॉज माई फर्स्ट थॉट एंड आई वॉज जस्ट लाइक आई नीड दिस इन माई लाइफ. दिस इज द बेस्ट बैग दैट आई ओन. एंड इसका कलर भी कितना डिफरेंट है. इट्स लाइक ब्राउनिश ग्रीनिश है, ब्राउन ग्रीन टाइप का है ये. Looks so nice. Like I don't have any bag like this. Definitely a different bag for me altogether. And इसके अंदर भी ना काफी स्पेस है. So it's not like कि बस ऐसे ही है, कुछ आएगा नहीं. मेरा तो सारा सामान इसमें आ जाएगा. इसमें ऑलमोस्ट ऐसे 2 पॉकेट्स है एंड देन यू कैन जस्ट क्लोज इट लाइक दिस. आप यहाँ से स्ट्रैप भी निकाल सकते हो. इसमें एक और एडिशनल स्ट्रैप है, बट आई एम नेवर चेंजिंग दिस स्ट्रैप इन माई एंटायर लाइफ बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस माई क्रिस्टल बैग. द नेक्स्ट बैग is also not a black bag. So I did not know कि Charles and Keith में Charles Itsy करके भी एक है, Itsy, sorry not Itsy, Itsy करके भी एक है and then Keith है. So it's Charles, Itsy and then Keith. So Itsy collection में ये ना उन्होंने कुछ अंदर ही रखा हुआ था. जब वो देख रहे थे कि मैं इंस्पेक्ट कर रही हूँ उनके सारे बैग्स एंड आई वाज लाइक ये नहीं वो नहीं. देन दे वर लाइक वी हैव दिस इनसाइड, लेट मी शो इट टू यू. एंड उसमें ना 2-3 अलग अलग कलर्स थे, बट अल्टीमेटली आई वाज लाइक I need this one. You guys are not ready. Like I'm literally telling you guys कि you are going to be shocked कि मैंने इस कलर का बैग कैसे ले लिया. It is my favorite color, but yeah, I know this is literally the cutest thing ever. It reminds me of strawberry shortcake. It could not be more perfect than that. इसका हैंडल देखो यार. तो इसका स्ट्रैप है, आप इसको खोल के शोल्डर बैग भी बना सकते हो एंड देन स्लिंग बैग तो ये है ही ऐसे. I have nothing like this and I was just like I need this because I love pink so much. A lot of people don't know this, but pink is like my childhood favorite color and because I wear so much black, so I feel like this is something that will literally stand out with my outfits. Okay, so that is everything that I got for my birthday this year. Thank you to everyone जिन्होंने भी मुझे इतने अच्छे presents दिए. I love every single thing that I got. Also I want to thank everyone who made like edits and DM me and everything. Very special moments in my life, so thank you so much. And if you were here to just watch the gift portion, that is over. Now let me tell you guys my disaster vacation story. I know I'm going to cry after this video. Okay, so I have a group of friends from all over the world, like Germany, UK, US and मैं इंडिया से. And we've been friends for 4 years. Like this year is like our 4th year of friendship. And pandemic के दौरान one of my friends was making a vacation plan. Obviously उसके बाद pandemic हो गया, so नहीं हो पाया वो. End of 2021 she again started to work on that plan and then she invited us, like हमारा जो पूरा group है. She was just like why don't we all meet because we've been talking for so many years now. Like pandemic के time पे ना they were some of my closest people in my life because I used to talk to them every single day. I used to talk to them for like hours and hours. I have watched every single BTS concert with them. They introduced me to a lot of BTS things. They are all ARMY by the way. They are very supportive of me and my YouTube channel and everything. And yeah, so my friend Taka, she decided to open this trip to all of us and we have been planning this trip for like 1.5 years. मैंने लास्ट ईयर अपने एयरबीएनबी के पैसे दे दिए थे बुकिंग्स कराने के लिए एंड लास्ट ईयर जून में मैंने अपने टिकट्स करवा लिए थे. वी वर सपोज टू गो टू कोरिया एंड जब डेट्स फाइनलाइज हुई थी तभी उनको पता था कि मेरा बर्थडे है. तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे के बाद कोरिया चली जाऊंगी, बट दे वर जस्ट लाइक नो वी वांट यू टू लाइक सेलिब्रेट योर बर्थडे विद अस. वी वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद यू. कोइंसिडेंस हो गया कि मेरे बर्थडे पे वी विल बी इन कोरिया टुगेदर. दे हैड प्लान्ड सो मेनी थिंग्स फॉर मी जो मुझे बाद में थोड़ा थोड़ा पता चला है एंड दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड सो वाज आई. लाइक मैं दिन गिन रही थी लिटरली. दिस वाज लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स इन माई लाइफ. आई वाज लाइक गोइंग थ्रू रियली shitty phases of my life and I was just like कोई बात नहीं, ये कोरिया ट्रिप ना मेरे लिए सिल्वर लाइनिंग है क्योंकि अल्टीमेटली मैं इस वेकेशन पे जाऊंगी. आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स. इट्स गोइंग टू बी सो awesome. So I applied for my visa and everything and I was like all set to go and 2 days before my flight my visa gets rejected. It fucking got rejected.
I could not believe it. It was like literally a tight slap on my face because there is no way कि मैंने ये situation imagine की होगी कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया. Like I'm reliving this moment with you guys right now and I'm still like in shock. Like I'm still processing this because ये मेरे साथ 2 हफ्ते पहले ही हुआ है. And I feel like ever since that happened, like something in me like completely shattered. Birthday भी गया, trip भी गया, friends से भी नहीं मिल पाई, पैसे भी waste हो गए. I was devastated, like honestly, because we've been planning this for 1.5 years. I was really looking forward to meeting my friends and spending 2 weeks with them. We were planning to go to Busan and Busan में मैं अपना birthday celebrate करती and then Busan से हम सोल जा रहे थे and सब कुछ बस 1 सेकेंड में ना खत्म हो गया. तब भी मैंने ना अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. मैंने सेकेंड टाइम अप्लाई किया कि चलो 3-4 दिन में आ जाएगा, बिकॉज अगर आप अर्जेंट बेसिस पे अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो चांसेस है कि थोड़ा जल्दी आ जाए. बट कुछ हो गया अगेन एंड देन आई वॉज टोल्ड कि मेरा वीज़ा 15 डेज में आएगा, लाइक मैक्स 15 डेज में, जल्दी भी आ सकता है. सो आई वॉज लाइक 15 दिन में क्या, उतने में तो मैं वापस ही आ जाती, मतलब मेरा रिटर्न टिकट था. सो आई वॉज जस्ट लाइक देयर इज नो पॉइंट देन एंड आई वॉज लाइक कि वापस अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मिनिमम 7 डेज लगने थे एंड 7 डेज भी अगर चले जाते तो बैरली मुझे 2 या 3 दिन मिलते. सो आई वॉज जस्ट लाइक द यूनिवर्स इज अगेंस्ट इट एंड accepted कि I am not going to South Korea, I am not meeting my friends and I am not celebrating my birthday with them. My entire family was devastated because सब इतना enthusiastic थे. Also because this was my first like solo trip, मैं अकेले travel करती and all of that. So like it was like a lot of good things, you know. And none of that happened. I was absolutely crushed. So on my birthday, I did not do anything. I told all my friends कि मुझे नहीं मिलना किसी से भी, and I just did not feel like socializing and meeting people and celebrating. But I did spend a lot of time with my mom, and that's exactly what I wanted to do. We went and watched a movie, and I came back home and had aloo posto, and that is all I did for my birthday this year. And that is why there is no birthday vlog. That was my little story time, birthday story time, and horrors of my birthday. ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. यही मैं बस सोच के यही चाह रही हूँ कि देर आर बेटर एंड बिगर थिंग्स फॉर मी and that is the only way I can like keep my spirits up, to be honest. I did not want this video to be this long, but yeah, I just had to like sum it up for you all. And yeah, that is it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to check out Freecharge, uska link description box mein hoga. And please subscribe to my channel before you leave, and I will see you guys in my next one. Bye bye.